Welcome to all here in the session of mathematics. In today's episode, we will discuss the continuity of any function, whether the function is continuous at the indicated points or not. তাহলে বর্তমান continuity start করিয়া পূর্বরু first definition দেখিও. What is the definition of the continuity? First definition মু লেখুছি বুঝিয়া চেষ্টা কর তারপরে ଆମେ graphically ଦେଖିବା ଆଉ mathematical ଦେଖିବା কোন ଆମେ derive করলে বা step wise procedure কোন রইছি continuity test পাই. Okay, first we'll take the definition. So first we'll write here, you see, that is a function y is equal to f of x is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a f of x रो वैल्यू केते हिथिबो ना f of a. ओके तो बर्तमान एटा होची डेफिनेशन एटा गोटे बॉक्स भीतर रख दउची जानि परिबो. दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. whether limit exist कले ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट संगे समान हुए तुम जानी आगु आमको टेस्ट करियार अछि x is equal to a पाखरे whether the function is continuous or not. ता माने limit x tends to a बाहर करिबा f of x तापर x जगह a पुट करी की f of a रो वैल्यू बाहर करिबा देखिबा दीटा को जदी इक्वल हला ताले कंटीन्यूअस. ग्राफ रू केमति जानिबा कंटीन्यूअस ऑफ द फंक्शन ग्राफ रे जानिबा बहुत इजी. हमें ग्राफ रू केमति जानिबा ना इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो ब्रेक और जंप एट द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन दैट इज वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन. देखो ये sin x रो गोटे ग्राफ अच्छे एटा गोटे sin x रो ग्राफ अच्छे एटी देखो पेन न उठे कि आमे गोटे ग्राफटा ड्रॉ करछु sin x रो जेते पॉइंट 0 to 2 पाई देछि ग्राफ 0 to 2 पाई रे आमे देखो पेन न उठे कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन आमे ग्राफटा ड्रॉ करछु. सो the function has no breakup here. In this function the function has no breakup, that's why this one is the continuous function. तापर एटा देखिलो एटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एटा जानिछो y is equal to bracketed x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 रे 0 0.1 रे 0 0.2 रे 0 1 हे गले किंतु 1 हे गला 1 हे गले 1 1.1 रे 1 1.2 रे 1 1.9 रे 1 किंतु 2 हे गले 2 ऊपर पळे गला गोटे जंप आछि गोटे ब्रेकअप आछि. देखो एटी 1 0 1 भीतर एटी गोटे ब्रेकअप एटी गोटे ब्रेकअप बा कंटिन्यूटी नाही फंक्शन रे तेनु ए फंक्शन टा कोन डिसकंटिन्यूअस एटा कोइ परिबो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ए फंक्शन टा साइन फंक्शन टा कोन ताले कंटिन्यूअस बुझी पाइलो समझते. सेमती ए फंक्शन टा देखो y is equal to a to pi x a greater than 1 पाई देखो एठी without lifting the pen you can draw this graph, that's why this one is also continuous function. ताले continuous function ग्राफ रु जानिया पई तुमर कोन दरकार ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दरकार. सपोज तुमर x is equal to pi by 2 पाखरे तुम चेक करिवो whether the function is continuous or not. अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट समस्त डेफिनेशन जानिछो जदि न जानछ टिके मन पके दवा. लेफ्ट हैंड लिमिट माने कोन दैट इज LHL. LHL मींस लिमिट सपोज इंडिकेटर पॉइंट a ताले x टेंड्स टू कोन लिखिबा a minus f of x ताले x जगह केते पुट करी हमर टेस्ट करियर अछि a पाखरे लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज नथिंग बट द लिमिट f of x जगह पुट केते पुट करिवा ना a थारु somehow very small number you have to subtract. से h टा कोन ना h टा वेरी स्मॉल नंबर जस्ट टेंड्स टू 0. द लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h त माने x जगह रिप्लेस केते कलो a minus h त माने देखिबा x जगह a minus h रिप्लेस करिबा त माने मु एठी टिके डिस्टेंस नउची कोन पई तुमको देखिया पई ग्राफ रे एक्चुअली तुमर एटा बहुत क्लोजर अछि ए जो डिस्टेंस टा ए देखो गोटे पॉइंट नेली सपोज नेबरहुड पॉइंट x is equal to a suppose pi by 2 मुने छे एटा को मु एठी ड्रॉ करली a minus h त माने a थारु टिके सानो
से ड्र कली गोटे नेबरहुड पॉइंट तमाने तार बाँ पटे सी अच्छी मुई जो डिस्टेंसटा नहीं एटा टिके बेसी नहीं तुमको शो करने क्लीयरली विजिबल तुम जापर जिनसटा कौन ए माइनस एच कौन ए प्लस एच कौन ताले लेफ्ट हैंड लिमिट रे ए माइनस एच एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच हेले ताले एफ एक्स वैल्यूटा ये अच्छी ताले एक्स वैल्यूटा ए माइनस एच यहाँ है ए रैल्यू सपोज ए इज इक्वल पाई बाय टू पाखे जी हम एक्स रैल्यू साइन एक्स वैल्यू साइन पाई बाय टू के 1 तेणु ये 1 1 पर्यंत जाइए ग्राफ एफ एक्स वैल्यू 1 है बुझिपाल एफ एक्स इज साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ एक्स इज साइन एक्स ताले एक्स इज पाई बाय टू हेले एफ एक्स इज के एफ ऑफ पाई बाय टू साइन पाई बाय टू 1 तेणु यहाँ हूँ पॉइंटा हूँ 1 तेणु यू एतिक एफ एक्स वैल्यू अच्छा एक्स जदि ए माइनस एच माने पाई बाय टू माइनस एच माने एच गोटे वेरी स्मॉल नंबर माइनस करदेल ताले एठी हला तार हला एफ एक्स वैल्यू एठी हला ता पाखर रहला सी सेमती राइट हैंड लिमिट देखो राइट हैंड लिमिट केमती लिखा जाए आर एच एल व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a plus f of x okay चल देख लो that is nothing but the limit f of x जगह केते पुट करियो जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ a ता माने a plus h पुट करियो h टा कोन h is very small number just tends to 0 okay so f of a plus h ताले बर्तमान देखिलो f of a plus h देखिया बाहर करिवा a plus h माने a रो राइट हैंड साइड आमे एटा को पाई बाय 2 नै छु पाई बाय 2 रो राइट हैंड साइड रे गोटे पॉइंट नेलु वेरी स्मॉलर वेरी नियरर टू पाई बाय 2 मु एटी सिना डिफरेंस नै छि तो एटा हला x is equal to a that is pi by 2 देख लो पाई बाय 2 पाखरे पाई बाय 2 माइनस h पाई बाय 2 प्लस h बर्तमान ताले ए जो डिस्टेंस टा मु नै छि ए डिस्टेंस टा एते डिस्टेंस नो तुम केवल विजिबल करिया पई ग्राफ रे विजिबल करिया पई एटा देखौछि किंतु एक्चुअली एते डिस्टेंस नाही a माइनस h ए जो डिस्टेंस a माइनस h माने बहुत कम डिस्टेंस ता माने अंक भितरे डिसकंटीन्यूअस नथियो माने ब्रेक नथिवो पूरा फंक्शन टार एफएक्स रो ग्राफ टा पूरा लागी की रहितबो लेफ्ट हैंड लिमिट रो वैल्यू जहा राइट हैंड लिमिट रो वैल्यू सेया एवं f ऑफ a रो वैल्यू भी सेया से तीन जनकर वैल्यू जदि मिसी जीवो ताले जानिबो कंटीन्यूअस ता माने एठी तुमे लिखि पारिबो LHL इज इक्वल टू RHL ता माने लिमिट एक्जिस्ट कला आ सेटा का संगे समान हला f ऑफ a ताले तीनटा को समान हला LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a जदि हे गला तांको मितरे आउ ब्रेकअप नाही बा जंप नाही बा डिसकंटिन्यूटी नाही तेनु कंटीन्यूअस ओके बुझी पाइलो सिंपली कौन जान टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी जदि करिवो फर्स्ट यू हैव टू एट x इज इक्वल टू a जे जोठी टेस्ट करिया देथिबो सेटा होची इंडिकेटेड पॉइंट सो एट x इज इक्वल टू a फर्स्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x दैट मींस f ऑफ a x जगह a पुट कर दो खाली राइट हैंड साइड रे जहां बारियो सेटा होची f ऑफ a रे वैल्यू आपने नेक्स्ट पॉइंट रे एटा फर्स्ट पॉइंट रे बाहर करियो नेक्स्ट पॉइंट रे LHL RHL बाहर करी की करि परिबो LHL भी बाहर करि परिबो थर्ड पॉइंट रे RHL बाहर करि परिबो और यू कैन इवैल्यूएट लिमिट सिंपली लिमिट x टेंड्स टू a f of x रो वैल्यू केते नाउ यू हैव टू चेक वेदर लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a or not if this one happen then you can write fx is continuous at x is equal to a ओके लेती बुझी पाइलो ताले डेफिनेशन में हम एतिकी जानियो पाइलो ए फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous at x is equal to a ता माने x is equal to a पके fx रो वैल्यू बाहर करिवो दैट मींस एटा डिफाइंड होतियो तार वैल्यू बाहर करथियो आ एटा को जाय इंडिकेटेड पॉइंट माने x is equal to a पाखरे से टेस्ट करिया देइची whether the function is continuous or not ता माने a पाखरे लेफ्ट हैंड लिमिट बाहर कर परियो राइट हैंड लिमिट बाहर कर परियो तापर सेटा को टेस्ट कर परियो और लिमिट x टेंड्स टू a लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट न बाहर करले भी हे परियो लिमिट बाहर करियो लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू जदी f ऑफ a हे गला ताल जानलो कंटीन्यूअस और LHL RHL बाहर करी इक्वल करी कि f ऑफ a बाहर करले भी हबो ओके प्लस 2 सेकंड ईयर कोर्स रे डेरिवेटिव रो फर्स्ट चैप्टर अछि टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन तो एक्सरसाइज 7a रो नंबर 1 रू स्टार्ट करिया सेही प्रॉब्लम रू गोटे गोटे बुझी जिबा आस्ते आस्ते सो नंबर 1 B to 1
See, examine the continuity of the following function at indicated point. Given, first we try given function fx is equal to fx, this is b1, and b1 ଦେଇଛି fx is equal to indicated point ଦେଇଛି and function be given, that is x square minus s square by x minus a if x not equal to a, and if x is equal to a, then this is given a. You have to test at x is equal to a. Okay, so now we'll take the solution. How is it? Question ta padlo samaste. fx ଦେଇଛି कोन x square minus s square by x minus a if x not equal to a, ता माने कोन एटा लिमिट बेले नबो, तमन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बेले एटा निया जियो फंक्शन के डेफिनेशन को जाओ. टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी रे कोन बाहर करिया पड़े, एफ ऑफ ए बाहर करिया पड़े, आरएचएल बाहर करिया पड़े, एलएचएल बाहर करिया पड़े. जदी तुमे जानुछ लिमिट खाली बाहर कर देले भी आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट, सेटा गोटे बाहर करी भी जदी एफ ऑफ ए संग इक्वल हे जाउची ताल भी जानि जीवो तमे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ता माने हमकु बाहर करिया पड़िबो एट x इज इक्वल टू a एफ ऑफ ए रो वैल्यू केते आ लिमिट रो वैल्यू केते, ए दीटा जदी इक्वल होउची ताले तुमे जानि गलो एटा कंटिन्यूअस. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट विल राइट गिवन व्हाट इज द फंक्शन, गिवन fx टा फंक्शन जो देइछि फंक्शन टा लिखि दबो, that is x square minus s square by x minus a if x not equal to a, and this one is a if x is equal to a. You have to test at x is equal to a. Okay, first you will find at x is equal to a what is the value of fx, that is you can write f of a. इट देखो x जगह केते रिप्लेस कलो, a रिप्लेस कलो, ताले when x is equal to a then the value of fx is equal to how much, a. So therefore you write here a. Next we will find limit x tends to a f of x बा RHL LHL बाहर करले भी हबो, अल्टरनेटिव मेथड देखे देबी. So limit x tends to fx टा केते ना, limit x tends to a means x not equal to a. So x not equal to a बेले fx रो वैल्यू टा केते तुमर देइची x square minus a square by x minus a. So fx should be replaced by x square minus a square by x minus a, or in other word this one can be written as limit x tends to a x plus a whole into x minus a whole divided by x minus a. The x minus a cancel, so this is nothing but the limit x tends to a x plus a. x plus a hele a plus a, that is a plus a kete hegala 2a. Okay, so here f of a find ala kete, f of a is equal to a and this one is equal, limit is equal to 2a. So they are not equal, that's why the function is discontinuous. You should write here f of a is not equal to limit x tends to a f of x. That implies the function, you should mention the function f of x is not continuous or discontinuous भी लिख परियो, is not continuous at x is equal to a, or discontinuous भी लिख परियो, or you can write the function fx is discontinuous. Continuous but discontinuous लिख परियो, is not continuous but discontinuous at x is equal to a. Okay, बुझी पाइला समझते ताले at x is equal to a f of a रो वैल्यू बाहर करलो, तापर लिमिट बाहर करलो at x tends to a, ए लिमिट बाहर करलो कोन, लिमिट at x tends to a fx रो वैल्यू बाहर करलो, सेटा ला 2a देखिलो, सेटा टेस्ट करलो सेतिटा इक्वल होउची ना नाही, जदी इक्वल नुहो ताले देखि दबो एटा कोन ना, फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, जदी इक्वल हला इज कंटीन्यूअस.
अच्छा तुम्हें चाहूथिबो सर एलएचएल आरएचएल लिखिकी टिके बाहर कर देले एटा एलएचएल एटा लिमिट न बाहर करके एलएचएल आरएचएल लिखिकी जदि बाहर करा जाए ठीक सेम फार्मूला रे अल्टरनेटिव वे देखै दउस तुमको अल्टरनेटिव वे हम लिखियो गिवन fx is equal to now f of a is equal to a लिख देला LHL limit x tends to a minus suppose LHL RHL बाहर करी करिया देखो limit x tends to a minus fx is equal to कोटा लिखा बो limit x tends to a minus माने कौन ए संगे इक्वल नुह ताले कोटा लिखा बो x square minus a square by x minus a लिखा बो कारण x is equal to a बड़े इटा होची x not equal to a बड़े इटा होची x tends to a minus माने x square minus a square by x minus a so this is nothing but the limit h tends to 0 x जगह केते पुट करिबा a minus h this is nothing but the a minus h रो whole square minus a square by a minus h minus a left hand limit em बाहर जान एटा that is limit h tends to 0 a minus h रो whole square केते a square plus a square minus 2ah minus s whole divided by a minus h minus a cancel then we have left with limit h tends to 0 a square cancel here h common नहीं जाओ h common ले h minus 2a whole divided by minus h cancel ठीक है ताला देखो that is limit h tends to 0 h minus 2a by minus 1 okay so this is nothing but the h जगह 0 put कर ले minus 2a by minus 1 that is minus 2a by minus 1 that is nothing but the 2a okay so RHL find करिवा RHL कहते हैं सेमती limit x tends to a plus fx अगर पुट कर दो x square minus a square by x minus a तापर लिमिट h tends to 0 लिखवा लिमिट h tends to 0 x अगर केते पुट करिवा a plus h रो whole square minus a square whole divided by a plus h minus a cancel now we have left with limit h tends to 0 a plus h whole square a square plus a square plus 2ah minus a square by h so a square cancel now we have left with limit h tends to 0 h taking as common h plus 2a by h cancel so limit h tends to 0 h plus 2a okay h tends to 0 लेटा के तला 2a तले एटा ला 2a एटा देखो LHL है 2a RHL है 2a so limit है 2a but f of a केते हिथिला LHL is equal to RHL is equal to 2a but not equal to f of a that means the function is not continuous the function fx is not continuous or you can write discontinuous is not continuous at x is equal to a or x is equal to okay समस्त बुझी पाइलो ताले एटा दी प्रकार कर देली गोटे मेथड हला f of a फाइंड कलो डायरेक्ट लिमिट फाइंड कलो देखियो इक्वल होउछि ना नहीं नॉट इक्वल हला एटा नॉट इक्वल हला माने लिखिलो इज नॉट कंटीन्यूअस बुझी पाइलो आ गोटे मेथड हला कोन LHL बाहर कलो तुमे नेक्स्ट बाहर कलो RHL नेक्स्ट देखिलो f of a संगे इक्वल हला ना नहीं f of a टा हमर कते हितिला f of a टा हितिला a
LHL is equal to RHL is equal to 2a hela. A is not equal to 2a. It is not equal hela. Not equal hela mane this is not continuous or discontinuous at x is equal to a. Now we'll take next number, that is bit 2. Number 1 bit 2 second year ପାଇଁ ବି ଦରକାର ଏଇଟା. Second year derivative chapter first exercise रे ଅଛି. First year ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଏଇ continuous chapter ଟି ଅଛି. ତେଣୁ ଏଇ continuity ର ଏଇ ଯେତେ problem ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ବି ନିଜେ ନିଜେ ଆଗରୁ କରିଦେଲେ second year ରେ ତୁମର ଏଇଟା help କରିବ. Okay. So now we'll go to the bit 2, that is number 1 bit 2. If x less than equal to 0, you have to test at x is equal to 0. So solution नवा जो एटा ही given condition नहीं जाउची. This is the given condition for the solution, that is fx given. Now we'll take f of 0 at x is equal to 0. आगो f of 0 माने at x is equal to 0. At x is equal to 0 fx रो value केते 0. So इटा बाहर कर दला 0. Next we'll find limit. So limit x tends to 0. X tends to 0 sin 2x by x. हमें जानी छु गोटे formula limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1. मन अछि ना नहीं एठी जहा थिबो तळे से थिबो सेटा tends to 0 हितिबो तार वैल्यू केते होय 1. So here we have 2x, एठी तळे 2x नहीं 2x आनिबो ताले. So limit x tends to 0 sin 2x by 2x into 2. Okay, ताले 2x गोटे 2 मल्टीप्लाई कलो गोटे 2 डिवाइड कलो ताले यार वैल्यू हे गला 1, लिमिट रो वैल्यू हे गला 1 into 2, that is nothing but the 2. Okay, तो लिमिट रो वैल्यू 2 हला, बट f of 0 रो वैल्यू केते हिचे हमर f of 0 रो वैल्यू 0 हला, but limit रो वैल्यू हला 2. So they are not equal. So you can mention here limit x tends to 0 f of x not equal to f of 0. That implies the function fx is not continuous at x is equal to 0. ताले 0 पाकर एटा continuous हलानी कारण f of 0 not equal to f of x. Limit x tends to 0 f of x. Okay, now we'll take the bit 3. Bit 3 रे question कौन अच्छी देखो, fx is equal to that is 1 plus 2x whole to the power 1 by x if a continuity chapter पूर्व बहुत गुड़ाए फॉर्मूला जो फॉर्मूला गुड़ा मन नहीं मन रखी दियो. लिमिट रो बहुत गुड़ाए फॉर्मूला अच्छी, फॉर्मूला गुड़ा कही दउची, फॉर्मूला गुड़ा टिके मन रख देले एटा करिया को सुविधा हो तुमको. सपोज फर्स्ट फॉर्मूला होची लिमिट x tends to a x to power n minus a to power n by x minus a is equal to n a to power n minus 1. Second formula limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1. Third formula limit x tends to 0 tan x by x is equal to 1. Fourth formula limit x tends to 0 e to power x minus 1 by x is equal to 1. Fifth formula limit x tends to 0 a to power x minus 1 by x is equal to ln a. Then next formula, sixth formula logarithmic function the limit x tends to 0 log. Sixth formula logarithmic formula, that is limit x tends to 0 log 1 plus x whole to power 1 by x now bar divided by x is equal to how much? 1. Okay. Seventh formula, that is limit
x tends to 0, 1 plus x whole to power 1 by x is equal to e, or you can say this formula can be written as likewise, that is limit 1 plus lambda x whole to power 1 by x is equal to e to the power lambda tends to infinity 1 plus 1 by x whole to power x, that is 1 to power infinite form. It will be e lambda thile भी सेमती लिख पारिबो x रे. You can take another formula for the inverse trigonometry function, that is limit x tends to 0 sin inverse x by x is equal to also 1, and also limit x tends to 0 tan inverse x by x is equal to 1, and another formula is there, that is limit x tends to infinity, limit x tends to infinity sin x by x is also 1. Okay, so एतिक फॉर्मूला अछि, एतिक फॉर्मूला मन रख दबो, मन रख देले तुमको लिमिट करिया को सुविधा हो. Okay, now we'll take the solution. ए क्वेश्चन टा देछि at x is equal to 0 पाखरे e square given. Okay, if x is equal to 1 plus 2x whole to power 1 by x, if x not equal to 0, if x is equal to 0, देखो क्वेश्चन में देछि is equal to e square. Now we'll take the solution. Okay, given condition first लिख दियो. First given the function fx is equal to function जहाँ देछि आगे लिख दियो 1 plus 2x whole to power 1 by x if x not equal to 0, and e square if x is equal to 0. At x is equal to 0, at x is equal to 0, that implies f of 0 टा केते हो गला, f of 0 केते e square, बुझि पाइलो. at x is equal to 0, f of 0 x जगह 0 पुट कले e square given एटा, this one is given condition. Now we'll find the limit, that is limit x tends to 0 f of x. This is nothing but the limit x tends to 0 f of x जगह when x tends to 0 माने x not equal to 0, that is केते देछि 1 plus 2x whole to power 1 by x, 1 plus 2x whole to power 1 by x. Okay, so this is nothing but the limit x tends to 0. फॉर्मूला देखिला कोन अछि, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखिला कोन अछि, limit x tends to 0 1 plus x whole to power 1 by x, ता माने x by 1 एटी जहाँ थिबो पावर रे कोन थिबो 1 by x, ता रेसिप्रोकल जहाँ थिबो तार उल्टाटा थिबो, ताल तार वैल्यू केते होछि e. सो एठी भी सेमती पैटर्न रे हम सजाय पड़ो, एठी 1 plus 2x अछि, ता माने 2x by 1 अछि, तो पावर रे केते रहया दरकार 1 by 2x रहया दरकार, किंतु 2x नथिला, ताले गोटे 2 डिवाइड करलु माने गोटे 2 मल्टीप्लाई कर दलु. ओके, बहुत इजी अछि, देखो आराम रे, दैट इज लिमिट x tends to 0 1 plus 2x whole to the power 1 by 2x, पैटर्न हमर चली आसला, पूरा फार्मूला पैटर्न चली आसला, तार वैल्यू e हबो, ताले ए जो होल स्क्वायर टा हमर कोठी चली आसीबो, पूरा होल रो स्क्वायर आसीबो, लिमिट पूरा भीतर पळे आसीबो, होल रो स्क्वायर हे गला. सो एटार वैल्यू केते अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एटार वैल्यू गेला टोटल रो वैल्यू गेला, टोटल रो वैल्यू गेला e अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. बुझि परछो तो ए फार्मूला अनुसार लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x by 1 whole to power 1 by x is equal to e. ओके, सो e to the power 2 अछि, एठी 2 अछि, एटार वैल्यू e ब्रैकेट भीतर जे अछि तार वैल्यू e होल स्क्वायर e स्क्वायर हला, तो हमर कोन हे गला e स्क्वायर हला, एठी हला लिमिट और f of 0 भी वे केते इतला e स्क्वायर, सो दे आर इक्वल, सो कंटीन्यूअस लिखियो here limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0. That implies the function fx is continuous at x is equal to 0. Okay,
Now we'll go to the next number, that is bit 4. Question देखो, given fx is equal to x sine 1 by x, isn't it? If x not equal to 0 and this one is equal to 0, if x is equal to 0 and you have to test at x is equal to 0. Okay, now you see at x is equal to 0, f of 0 kete bahar korte, that implies f of 0 according to the given condition এটা 0 at x is equal to 0, fx value kete hei gala 0, তারপর লিমিট বার করিয়া, that is limit x tends to 0 f of x, or in other word that is limit x tends to 0 fx, that is x sine 1 by x. So x is equal to 0, x tends to 0, let a 0 into something is 0, so this is nothing but the 0. So hence here you can write here limit x tends to 0 fx is equal to f of 0, that implies the function is continuous, the function is continuous at x is equal to 0. So that's all for the today's session. Next class re ame algebra of continuous function padiba ebong rest of the problem of the exercise 7a madhya kardaba. Okay, so until then, goodbye, thank you.